Dear student, as we have discussed about the like spatial analysis and spatial regression, in which you can use the like coefficient of W, which is like the impact of spatial analysis, impact of geography, impact of culture, impact of even environmental factors. The next one is how to interpret the findings. And as I have already discussed with you, that your spatial model is depending on the value of rho, whether the value of rho is equal to 0 or it's not equal to 0. And if the value is equal to 0, the situation is entirely different. आपका जो spatial regression है, it become the simple OLS. OLS is the best model. But if the rho is not equal to 0, it means that there is the impact of geography, there is the impact of environmental factors, and there is the impact of institution, there is the impact of culture. आप उसमें include करेंगे तब आपका बेस्ट मॉडल होगा. अदरवाइज इफ द रो इज नॉट इक्वल टू 0 and you are going to estimate the OLS, your findings are not efficient. But on the other hand, if your rho is equal to 0, the OLS is the best model, is the best estimator, and meet the criteria of blue best linear unbiased estimator. So आपने इसमें बहुत केयरफुल होना होगा about the value of rho. And if the rho is not equal to 0, then the next step is to like check the intensity, to check the impact of neighbor on the neighbor. यानी उसके डिफरेंट लेवल पे हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारी जो सिग्निफिकेंस है, इम्पैक्ट है. और उसको अगेन जो इन द स्टार्ट आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट द थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन, whether the geography is theoretically associated with the development of your people or it's not contributing factor. तो आपने थ्योरेटिकली बेस पे जब चलेंगे तो आपका मॉडल जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर होगा. इसलिए यू हैव टू फोकस ऑन द थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन, you have to focus on the like scatter plot of the data. What data is showing, like डेटा का पैटर्न क्या है, डेटा का बिहेवियर क्या है, क्या ये जोन स्पेसिफिक है, क्या ये आपका वो जियोग्राफी स्पेसिफिक है, क्या ये आपका वो बिग सिटी एंड स्मॉल सिटी एसोसिएटेड है, उसकी इंटेंसिटी क्या है. इससे आप अगर मूव करते हैं देन आपका जो भी मॉडल होगा उसके रिजल्ट कंपैरेटिवली बेहतर होंगे.